अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, हमास क्या है, हमास का मकसद क्या है, हमास आगे क्या कर सकती है, उस पर डिस्कशन मैं करना चाहूँगा। प्रोग्राम स्पेसिफिकली हमास पे फोकस्ड है। ये एक सऊदी अरब के एक अरब की वीडियो बड़ी वायरल चल रही है, इसने अरबी में कहा है। इसमें इसने ये बताया है कि फ़लस्तीनी है ना, वो अरब नहीं है। फ़लस्तीनी जिप्सीज हैं, मंगोल हैं, तुर्क हैं, इधर उधर के हैं, ये अरब नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये एक पायरेट्स का कबीला था। जो डाकू होते हैं ना सहराओं में, एक पायरेट होते हैं समंदर में जो जहाज़ों को लूटते हैं, एक ये पायरेट होते हैं रेगिस्तानों में। और ये एक फ़लस्तीन ज़ाहिर है यरूशलेम, उसके पास गजा, आज का जो गजा है, यहाँ पे ये कनानी कबीला रहता था। तो ये डाकू थे। और ये अरब ने ये भी कहा है कि हमास जो कह रहा है ना कि इसराइल हमारी ज़मीन है, तो वो इनकी बिल्कुल नहीं है ज़मीन, ये इजराइलियों की है। यही चीज़ हिस्ट्री भी कहती है और मैं भी कहता आया हूँ। अजीज़ दोस्तों, एक और सिनारियो आपके सामने लाऊंगा कि 48 से पहले तो ये कि ब्रिटिश अथॉरिटी का एक प्रोविंस था जिसका नाम फ़लस्तीन रखा गया था, लेकिन यहाँ यहूदी भी रहते थे, क्योंकि यहाँ के पोस्टेज स्टैम्प्स, यहाँ के कॉइन्स, उस पर अरबी, इंग्लिश और हिब्रो, इब्रानी ज़बान जो है यहूदियों की, उसमें लिखा होता था। इसका मतलब यहाँ यहूदी रहते थे और यहूदी इन्फ्लुएंस था, जब भी उनकी ज़बान हर जगह होती थी ना। लेकिन 48 के बाद ये पोजीशन है कि इज़राइल में 19% पॉपुलेशन मुस्लिम है इज़राइल में, जबकि फ़लस्तीन के जो गजा और वेस्ट बैंक है उसमें 0% यहूदी हैं। ये मुसलमानों का इतिहास रहा है कि जहाँ पे इनकी हुकूमत होती है वहाँ से नॉन मुस्लिम्स का सफाया कर देते हैं। जैसे इंडिया में 1947 में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में 20% नॉन मुस्लिम थे। आज पाकिस्तान में 2% नॉन मुस्लिम रह गया है। इंडिया में 10 से 12% मुसलमान थे, आज 20% पे पहुंच गए। तो ये फ़र्क होता है कि ये जहाँ माइनॉरिटी में होते हैं वहाँ पे वो उनको सारे इनके राइट्स से ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, और जहाँ मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ पे ये जुल्म करते हैं और सबका सफाया कर देते हैं। अजीज़ दोस्तों, हमास क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। पहले आप हमास के ही इस लीडर की बात सुन लें जो इसने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच की है, उसके हवाले से। लीडरशिप्स of the Palestinian people, my people by the way, and I have the authority to say this. If they disown me, if they label me as a traitor, they can say whatever they want to say. I sacrificed a lot for the sake of Palestine, of Islam, even of Hamas. I spent 27 months in Israeli prisons. I grew up witnessing the first Palestinian Intifada, and I had no idea what was going on. As a child, I was fed with hatred that Israel was our enemy, and Israel was the source of our suffering, while the Palestinian leaderships, from Yasser Arafat to Mahmoud Abbas to Abu Jihad, all of them were sitting in Tunisia, spending billions of dollars. In the meantime, they were sending children to die, throwing stones, facing Israeli soldiers. I was one of them. They used us. They sent us to the slaughterhouse. They wanted us to die. The shepherd thought, how many sheep I'm going to sacrifice today to get the attention of the world, so maybe we get some more funds. So they decided to slaughter 100 sheep. 200 sheep. Then Hamas came later on, 20 years later, and they did the same thing, using children and women as a human shield in Gaza Strip. Then
we have now a new mask for the shepherd, and written on it BDS, to manipulate the international community, create chaos. They're very good at doing that. Whether you call it intifada, you create chaos. In a state of chaos, you distract everybody, and the thief knows how to find a way. Same thing now, on a global scale. They are manipulating the friends of Israel, the only democracy in the Middle East, the only true democracy. While the shepherd, by the way, is not legitimate anyway. You know, somebody there sit here in this house of shame. I agree with you, Mr. Daniel. I agree. They don't represent the Palestinian people anyway. Who are you representing? The Palestinians in the West Bank or the Palestinians in the Gaza Strip? You are representing greed. Wearing the mask with what so-called Palestinian cause. You're a liar. You're a Lucifer. And at some point, you will be unmasked. If they were sincere and truthful in their approach towards peace, they would go and educate the Palestinian people, first of all, of the actual history, not their history. To compare Israel to apartheid of the South Africa, this is no comparison. The state of Israel, I know terrorists when I spent time in prison who had blood on their hands of Jewish people, and they had the right to go to schools and study and achieve higher degrees from Israeli schools. In Jerusalem, the Israeli government give the Muslims the right to worship on Temple Mount, and in the meantime does not give the right to the Jewish people to practice their religious freedom on Temple Mount. Me saying it somewhere else. The sheep thinks that the shepherd their best friend. The shepherd provides water, food, and creates the illusion for the sheep that it's protector. Sometimes wearing a mask, a political mask, in the West Bank or Tunisia or other locations, sometimes wearing an ideological and religious mask in Gaza or maybe other capitals of the Arab world. They have their own way to deceive the sheep and make the sheep dependent on them. But unfortunately, by the time the sheep realized that the shepherd was not their best friend or the protector of their interest, they're already in the slaughterhouse. This is the reality of what's happening in the Middle East. अजीज दोस्तों, हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जो ईरान और सीरिया की मदद से पनपता है। शियाओं का इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह जो लेबनान से ऑपरेट करती है, वो हमास मिल के हर चीज़ करते हैं। और तुर्की और कतर की पॉलिटिकल सपोर्ट इनको हासिल रहती है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी, और ज़ाहिर है बाकी पूरी दुनिया के मुसलमानों की इनको सपोर्ट रहती है। जब यासिर अरफात का और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर आइज़ैक राबिन का एग्रीमेंट होता है
अमेरिका में प्रेसिडेंट क्लिंटन के सामने, उस वक्त अल फताह को फ़लस्तीनियों की पार्टी माना गया था, और जो वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनको वेस्ट बैंक और गज़ा का प्रेसिडेंट बनाया था। इसको फ़लस्तीन अथॉरिटी का नाम दिया गया था, गज़ा और वेस्ट बैंक को। लेकिन 2007 में 2006 के इलेक्शन में हमास ने फतह को हरा दिया, क्योंकि हमास है ना एक्सप्लॉइट करता था सिचुएशन को। फ़लस्तीन है ना वो गज़ा, उसमें 53% लोग हैं ना वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, यानी गुर्बत की लकीर से भी नीचे गरीब हैं। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है ना वो अनएम्प्लॉयड है। और जैसे मुसलमानों को भारत में कम्युनल लीडर्स उनके खुद अय्याशियों में रहते हैं, लेकिन आम मुसलमानों को कहते हैं ये तुम्हारी सरकार है ना, इसकी वजह से तुम्हारे ये हालात हैं। क्योंकि वो उनको वायोलेंस और नफ़रत मदरसों में, यही हाल फ़लस्तीन का हुआ कि अल फताह एक पॉलिटिकली चीज़ों को लेकर चल रही थी, हमास आई, हमास ने चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और आम फ़लस्तीनियों को इसराइल के साथ हद से ज़्यादा नफ़रत, जो कि कम हो रही थी, पहले भी थी लेकिन फिर एग्रीमेंट के बाद कम हो रही थी, उस नफ़रत को बढ़ावा दिया और वायोलेंस की तरफ आम जॉबलेस फ़लस्तीनियों को लेके गए, और रोज़ की बुनियाद पे पत्थरबाजी और ये, हालांकि इसी गज़ा और वेस्ट बैंक से लोग काम काज के लिए इज़राइल जाते थे, उनको परमिट मिले हुए थे, लेकिन उसकी आड़ में फिर ये टेररिस्ट हमास भेजता था, और वायोलेंस की बुनियाद पे हमास ने कंट्रोल रखा, और फ़लस्तीनियों के जहनों में ये बात डाल दी थी कि तुम लोगों को इज़राइल से आज़ादी हम दिलाएंगे, हमास, और जब तक हम हैं तब तक तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, हम हैं तो तब तक तुम लोग सरवाइव कर लोगे। और अजीज़ दोस्तों, यही बदकिस्मती रही। इसको इस्लामिक वर्ल्ड के कुछ एक्सट्रीमिस्ट कंट्रीज़, बदबूदार कंट्रीज़ लाइक ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, वो उसको बढ़ावा देते रहे। शुरू के सालों में 40s, 50s, 60s, 70s, 80s तक सऊदी अरब और अरबियन गल्फ में वो जो पुराने ज़माने के बादशाह थे, जो बड़ी बड़ी उम्र के बादशाह थे, जिनका कोई इंटरनेशनल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक विजन नहीं था, वो भी इसमें शरीक थे। लेकिन फिर जब लीडरशिप ग्रूम हुई उन इलाकों में, उन अमीर अरब इलाकों में, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये हल नहीं है, ये वायोलेंस हल नहीं है, इससे हम लोगों का ही नुकसान होता है। तो आज वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, दुनिया में अपने नए नए रिश्ते भी बना रहे हैं मुल्कों के साथ, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो वो पीछे हट गए, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे शैतान मुल्क ये इसको बढ़ावा देते रहे, और उसका नतीजा ये निकला कि जैसे आज देखें पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये एक बुर्कापोश डाकू खातून ने एक स्पीच की है, आधे मिनट की, ज़रा सुन लीजिए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं, ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम को ख़त्म करके अपना कब्ज़ा ख़त्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अब इनके कनेक्शंस आप देख लें, देखें, हमला हमास ने किया इजराइल पे, पॉलिटिकल सपोर्ट आ रहा है कतर से, कतर में बैठा हुआ है हमास का लीडर, कतर ने उसको पूरा सेफ हेवन दिया हुआ है। ब्रसल्स और पेरिस में जो हमला हुआ सिविलियंस के ऊपर, मारे गए बेचारे, वो ISIS क्लेम कर रही है। कहाँ ISIS, कहाँ हमास, ये सब मिले हुए हैं, एक दूसरे के कोलैबोरेशन से चलते हैं। अब ये जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में स्पीच कर रही थी
कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और हम इसराइल का सफाया कर दें इस दुनिया से। तुम लोगों की औकात क्या है यार? साला भीख मांग के तो खाने खा रहे हो तुम लोग। तुम लोगों के पास है क्या? तुम्हारा एटम बम है ना जो पाकिस्तान का, वो भी इनके कंट्रोल में नहीं। देखें, पाकिस्तान का एक एटम बम था उसामा बिन लादेन, एक एटम बम था एमन अल जवाहिरी। इन सबको अमेरिका के हवाले पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स ने मुखबरियां करके किया ना। ये कर्नल इकबाल बेग जो आज लास वेगास में अय्याशियां कर रहा है, उसने उसामा बिन लादेन की मुखबरी की थी। एटम बम इन्होंने नॉर्थ कोरिया, लीबिया को बेचे थे, जो वो भी आर्मी ने बेचे थे। तो पाकिस्तान की आर्मी तो मतलब घटिया से घटिया लेवल पे है ना। तो एटम बम भी अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका की मर्जी के बगैर ये नहीं चला सकते। ये जो खबर आई थी, एक एनालिस्ट ने दी थी कि पाकिस्तान ने इतने बिलियन डॉलर में 2 एटम बम एक अरब को भेजे हैं, उसकी अभी तक कहीं से कंफर्मेशन नहीं आई। और मुझे भी अब डाउट हो रहा है कि अमेरिका का ख़ास तौर पे पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल पे पूरी नज़र है। अजीज़ दोस्तों, आज से 2 हफ्ते पहले तक यूरोप, अमेरिका में हमास की सपोर्ट पे कोई सज़ा नहीं थी, कोई मसला नहीं था। लेकिन फिर अब इनको अकल आई है। अब जैसे फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि जो भी हमास को सपोर्ट करेगा या इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट करेगा उसको 5 साल की कैद की सज़ा होगी। अब सवाल ये है कि लाख आदमी लंदन में खड़ा होकर प्रोटेस्ट करता है, इनके पास इतनी पुलिस है? लंदन और मुसलमान जितने भी शहर हैं यूके के, उसमें तो मुसलमान मेयर हैं। बोरिस जॉनसन जब यहाँ मेयर था तो यहाँ क्राइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसने पुलिस स्ट्रॉन्ग की थी, पुलिस में भर्तियां रखता था, सब कुछ करता था। सादिक खान ने आके तो पुलिस में भर्तियां भी कम कर दी। पूरी करप्शन पे सरकार चला रहा है सादिक खान। पुलिस तो यहाँ पे मेयर के हाथ में होती है ना, तो कौन सज़ा देगा? फ्रांस फिर भी एक हद तक चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, बाकी यूरोप में मामला ख़राब है। देखिए, हमास ने ये बयान दिया है कि हमने 250 होस्टेज अब तक रखे हुए हैं, और हमारा इसराइल पे हमला करने का मकसद भी ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा उधर डर पैदा करें, लोगों को मारें और ज़्यादा से ज़्यादा होस्टेज लाएं, ताकि इसराइल की जेलों में जो फ़लस्तीनी हैं उनको आज़ादी दिला सकें बदले में। लेकिन इसराइल तो बात करने की बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा। तो ये इनका तरीक़ाकार है। देखें, ये फैमिली हैं जिनके बच्चे, जिनके बड़े, जिनके लोग, किसी का बूढ़ा है, किसी के बच्चे हैं, किसी के जवान बच्चे हैं, वो होस्टेज हैं। ये फैमिलियों की हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। ज़ाहिर है, हम समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा या मेरा बाप या मेरी माँ या मेरी बीवी या मेरी बहन या मेरी रिश्तेदार अगर किसी की कैद में होंगे, वो भी टेररिस्टों की कैद में होंगे, तो मेरा क्या हाल होगा। तो ये हम समझ सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में 2015 में ये साहब ने हमास का पूरा कच्चा चट्टा खोला है। इसकी वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। In Syria, ISIS or Israel? Who is the greater threat to peace in Lebanon? Hezbollah or Israel? Who is the greater threat to peace in Egypt? The Muslim Brotherhood or Israel? Do you understand? In every case, everyone in this room would acknowledge that ISIS is a greater threat to peace in Syria than Israel. In every person in this room, I have to believe, even Professor Schlein, would have to agree that ISIS is a greater threat, that the Muslim Brotherhood is a greater threat, and that Hezbollah is a greater threat. All of a sudden, we change the entire scenario because it is now Hamas instead of Hezbollah, or ISIS, or Muslim Brotherhood. Number two, just on this issue, just appealing to your common sense. In modern history, every war has been between a free state and a police state, or 2 police states. I cannot think of a 20th century example of any other. And the same holds true here.
You have the police state of Hamas. If you differ with Hamas, they kill you. Where in the world other than Israel does anyone ever argue that the free state doesn't want peace and the police state wants peace? There is no other example on earth. There is no other example on earth of a country targeted for extinction. None. 220 some odd countries in this world. Only Israel is targeted for extinction. And we have a debate on whether the state targeted for extinction is the barrier to peace. That is quite a leap of faith. In the age of beheadings, as you have tragically experienced here in the UK, we have a debate. Hamas is a kindred spirit to ISIS and Hezbollah and Boko Haram. What do you think, they're an exception? All of those are monstrous. But Hamas, they're a terrific bunch who really want peace. If it only weren't for settlements. There were no settlements prior to 1967. Why wasn't there peace? Israel would dismantle the settlements for real peace in a moment because the Israeli people are much more interested in sending their kids to college and in having a peaceful life and in making a good living and inventing more medical and technological devices than they are in fighting wars. This would be the first free state in history to prefer war to peace. It is highly, highly unlikely. The Hamas covenant, which you heard from Adam earlier, the Hamas covenant, it says Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it. If I could have extra time, over 8 minutes, I would take your question, but I have too much to get through. The Islamic resistance movement is a distinguished Palestinian movement whose allegiance is to Allah and whose way of life is Islam. It strives to raise the banner of Allah over every inch of Palestine. Yale University translation. I'm sure they didn't use inch in the original. On that exact point. So that is what Hamas is devoted to. Now, yes, I can. Oh, then please. So all of the organizations that you're citing as a threat to peace just happen to be Arab and or Muslim. Could you explain to me why you think that might be the case, that you only view these organizations as threats to peace? I don't. Okay. You obviously, those of you who applauded perceived the profundity of the question that I didn't. I don't quite understand. They are all a threat to peace. That is correct. Why did I only pick on Arab Muslim? I said Boko Haram. That is not Arab. Arab and or Muslim. Yes, Arab and or Muslim. That is correct. The only beheading groups in the world today, to the best of my knowledge, are Arab or Muslim. Why do you think that is, in your estimation? Why do I think that is? Sad to say, it was answered by Arab intellectuals at the United Nations, because the Arab world is a benighted place at this time. The status of women is particularly low. The Arab world translates fewer books in a year than in 10 years than Greece. The entire Arab world translates fewer books than Greece does in 1 year. There is no interest in the foreign world. It is a benighted world, the Arab world. It is a tragedy. This is not anti-Arab. If you love Arabs, you have to understand how low the moral level of the Arab world at this point is. And that has nothing to do with individual Arabs who may be saintly. But that is the dominant moral state. You are taught that you cannot judge civilizations as if Britain and Mali are on the same moral level. That is to give up on hope for humanity, to claim that there is no civilization that has produced something better than something else. So that is the tragic reason. They're not beheading people in Western civilization. They are in the Arab and Muslim worlds, and not the entire Muslim world. Now, why then? My second part is to answer the question, why is something so obvious that Israel wants peace and that Hamas wants to destroy Israel? Why is that debated at one of the most illustrious academic institutions on earth, Oxford? I have two answers. One is, there has been a broken moral compass in the intellectual world in the West for the last perhaps 80 or 100 years. I will give you an example. I studied at Columbia University at the School of International Affairs.
I was taught by brilliant, and they were brilliant, professors that the United States and the Soviet Union were moral equivalents. It was capitalism versus communism. Two economic theories, that's all. Neither was better than the other. You may not recall because you weren't born, many of you, but Ronald Reagan, the President of the United States, called the Soviet Union at one point an evil empire. He was lambasted. He was declared by Columbia and Harvard and Yale and Princeton and the New York Times a fool for having the temerity to make a moral statement about the Soviet Union, a place that had created the Gulag Archipelago and killed 40 million of its own people, not to mention a genocide in Ukraine. That is what I tell you, students, that's what has taken over in Western universities, a broken moral compass that truly calls evil good and good evil. I went through this, and I'm afraid many of you are going through this. This evening is one such example. And finally, the media. The media gives you a jaundiced view of the world. Gaza starts a war to kill as many Israelis as possible. And all you see on the BBC and Sky News, as we see in America on our TV, is dead Gazans. That's all you see. I shudder to think if in World War II the same media covered World War II, you would have seen far more dead German civilians than dead British civilians. But it takes a very, very frail moral mind to believe that you determine right and wrong by the number of dead. That's what we are told. Look at how many Gazans were killed and how few Israelis. Well, look at how few Brits were killed and how many more Germans were. Does that make the Germans right in World War II? That's the facile moral thinking that pervades our world. So I end with this, and that is, it would be a tragedy, in my opinion, if it came out, if it were known, the Oxford Union actually determined that Israel and not Hamas were the greater threat to peace. Outside of the world of academia, it is pretty clear. It's got to be clear here too.